So, welcome back, students. Today we'll discuss the concept of Ruby laser. So, Ruby laser was the first laser that was constructed, and it was constructed by T.H. Meinman in 1960. And सबसे पहले लेजर जो था वो कंस्ट्रक्ट माइक्रोवेव रीजन के लिए हुआ था. So this was the laser that was constructed out of the concept of optical laser कि ये हमारा इंफ्रारेड और विजुअल रेंज में काम करेगा. जो हमारा पहला लेजर था सबसे पहले माइक्रोवेव रीजन के लिए था. तो वी विल सी कि रूबी लेजर किस तरह से काम करता है. उसके पहले मैं रिकॉल करा दूं कि लेजर का कंसेप्ट क्या है. लेजर इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. दैट इज कि हम लाइट एम्प्लीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है. सो इसको हम एक साइंटिफिकली किस तरह से एक एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्ट करें कि हमें एम्प्लीफिकेशन मिले जिसके कारण से हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन हो एक लेजर लाइट के अंदर. So what usually happens is that we supply energy एक लेजर लाइट के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ रूबी लेजर. सो व्हाट वी डू इज कि दैट वी टेक अ रूबी क्रिस्टल. ठीक है. विच इज बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड दैट इज Al2O3. एंड इसके अंदर हम डोपिंग करते हैं क्रोमियम आयन की विथ 0.05% इम्प्योरिटी, जिसके कारण से ही हमें यहाँ पर रेड कलर की लाइट मिलती है जो रूबी लेजर की लाइट है. तो दिस इज डन बाय डोपिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड in the when it was Al2O3 is melted in purified form. This Cr2O3 is doped. So these chromium ions give the crystal a pink or reddish color depending upon the concentration of chromium ions. So laser rods are prepared from a single crystal of pink ruby which contains 0.05% of chromium by weight, and Al2O3, that is aluminum oxide, does not participate in the laser action. It only acts as the host. So ruby crystal is in the form of cylinder. We take around मिनिमम जो कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ था बेसिकली इट वाज लाइक 5 सेंटीमीटर का लेंथ था उसका एंड लाइक 1 सेंटीमीटर का डायमीटर था. इन हियर वी कैन चेंज लेंथ, लाइक वी कैन अपने हिसाब से जिस प्रकार से 2 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक रूबी का लेंथ लिया जा सकता है. एंड 1 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर का डायमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का डायमीटर लिया जा सकता है. और एज द हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द लेजर, द रॉड इज सराउंडेड बाय अ लिक्विड नाइट्रोजन टू कूल द apparatus. we'll see how that happens. ठीक है. तो अब एक लेजर के कंस्ट्रक्शन में हमें 3 कंपोनेंट्स मेन है. पहला हमारा जो कंपोनेंट होता है वो एक्टिव मीडियम, दूसरा होता है हमारा पंपिंग सोर्स और तीसरा होता है हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर. सो हियर जो डायग्राम एक्सप्लेन करा गया है इसमें एक हमने फ्लैश लाइट ली है जो कि हमने एक हेलिकल शेप में ली है और उसके अंदर हम एक रूबी रॉड को रखते हैं जिसके कारण से हम लाइट सप्लाई कर रहे हैं. और विच and in here we are using xenon flash tube. In here we are basically using xenon flash tube, and this ruby laser is there which is basically Al2O3 plus chromium doped inside ruby crystal, which gives it the bright pinkish red color. So what happens when what happens in the active medium, and what is the active medium in ruby laser? So active medium ruby laser में chromium ions है जो कि उसका acts as an active center in ruby crystal, and this ruby rod that is Al2O3 basically acts as a host. And pumping source which we used is the helical flash lamp that we used, which is filled with xenon gas. Or the ruby crystal is placed inside the xenon flash lamp, and this optical pumping is used to achieve a population inversion in the ruby laser. So, and the next step is the optical resonator. So the end of ruby crystal are polished. एक साइड इसका हाईली पॉलिश्ड मिरर लगेगा, दूसरी साइड इसका पार्शली सिल्वर्ड हम एक मिरर लगाएंगे इसमें, जिसके कारण से इस रूबी रॉड के अंदर जो भी एम्प्लीफिकेशन होगा वो हमें उस पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू हमें बाहर निकलता हुआ मिलेगा.
That basically is रूबी एक लेजर का कंस्ट्रक्शन है. There are three main components, which is the first active medium, second is pumping source, and the third is optical resonator. Active medium is the base, which is जिसके अंदर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है. Pumping source जो कि जो भी जिस भी प्रकार की और जहाँ से भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, और ऑप्टिकल रेजोनेटर वो सिस्टम जो कि हम रेजोनेशन जो सॉलिड स्टेट लेजर के अंदर सॉलिड स्टेट के लेजर के अंदर जो रेजोनेशन का काम करेगा, पार्टिकल्स को रेजोनेट करेगा, दैट मीन्स एम्पलीफाई करेगा, दैट इज द मीडियम ऑप्टिकल रेजोनेटर. यहाँ पे बेसिकली हम दो प्रकार के मिरर यूज करते हैं, हाईली पॉलिश्ड मिरर एंड वन इज पार्शली पॉलिश्ड मिरर. ये है एक रूबी लेजर का डायग्राम. तो रूबी लेजर वाज 3 लेवल लेजर सिस्टम. यहाँ पे जो हमारी एनर्जी लेवल्स है वो तीन तीन लेवल में स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है. यहाँ पे सपोज देर आर three levels: E1, E2, and E3, and E4. And E1 is the ground state, E2 is the metastable state, and E3 and E4 are the bands, energy bands. So E3 and E4 are considered only as one level because they are very close to each other. So pumping. So what happening here basically is कि सबसे पहले हम पॉपुलेशन इन्वर्स करेंगे. पॉपुलेशन इन्वर्स करने के लिए हमें पंपिंग लगेगा, दैट इज कि हमें सोर्स लगेगा. सोर्स लाइट हमारा xenon फ्लैश लैम्प है रूबी लेजर के केस में. So ruby crystal is placed inside the xenon flash lamp, and the flash lamp is connected to a capacitor which discharges a few thousand joules of energy. In ruby laser एक इसका ड्रॉबैक रूबी लेजर का ये है कि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है. So which discharges a few thousand joules of energy in few milliseconds. So a part of this energy is absorbed by the chromium ions in the ground state, and thus optical pumping raises the chromium ions to the energy levels inside the band E3 and E4. This process is called stimulated absorption. So the transition of bands E3 and E4 are caused by absorption of radiation corresponding to the wavelength approximately around 6,600 angstroms and 4,000 angstroms respectively. So the energy inside the bands E3 and E4 also known as pumping levels. So achievement of population inversion. So the chromium 3 plus ions in the excited state lose a part of their energy during this interaction with the crystal lattice and decay to the metastable state E2. Thus, the transition from excited state to the metastable state is non-radiative transition, or in other words, there is no emission of photons. So, as E2 is a metastable state, so chromium ions will stay there for a longer time. Hence, the number of chromium ions goes on increasing in E2 state, while due to pumping, the number of ground state in a ground state E1 goes on decreasing. The number of particles exist in the E1 state goes on decreasing. So as a result, the number of chromium ions become more in excited state, that is in metastable state, as compared to the ground state E1. Hence, the population inversion is achieved, and between E2 state and E1 state. The E1 is the ground state. Thus, the ruby laser fits into the definition of three-level laser system. So achievement of laser. A few of chromium ions will come back from E2 to even state by the process of spontaneous emission by emitting photons. The wavelength of the photon is 6943 angstrom here. This photon travels through the ruby rod, and if it is moving in the direction parallel to the axis of the crystal, then it is reflected to and fro by the silvered ends of the ruby rod, uh, which means that it is resonating or like amplifying until it stimulates the other excited ions and cause it to emit a fresh photon in phase with the stimulating photon. Thus, the reflections will result in stimulated emission, and it will result in the amplification of the stimulated emitting photons. This stimulated emission is the laser transition. The two stimulated emitted photons will knock out more photons by stimulating the chromium ions, and their total number will be 4 and so on, like 8, 16, 32. It will go on and on. So this process is repeated again and again. Thus photons multiply, and when the photon beam becomes sufficiently intense, then a very powerful and narrow beam of red light of wavelength 6943 Armstrong emerges through the partially silvered mirror in the which is the end of ruby crystal. So the output is here. Here it is shown in the diagram, whatever we have explained earlier. So the output wavelength of the ruby laser is 6943 Armstrong, and the output power is
10 to the power 4 and 10 to the power 6 watts, and it is in the form of pulses. So here it is seen that this is the E2 state and E1 state, and here the laser action is happening here. So in a three-level system, the lasing action happens between the metastable state and the ground state. So in here, we are getting the frequency output of the wavelength output of 6943.3 nanometer, which is like 6943 angstrom. So advantages of using Ruby light is, from the cost point of view, the Ruby laser is economical. Beam diameter of the Ruby laser is comparatively less than 2B of CO2 laser. Output of the Ruby laser is not less in as the helium neon gas laser. So the Ruby laser is in solid form, therefore there is no chance of wasting material of active medium. And the construction and working of Ruby laser is self-explanatory. But disadvantages of Ruby laser is the Ruby laser has no significant stimulated emission occur until at least half of the ground state electrons have been excited to the metastable state. That means ये pumping के टाइम पे टाइम लेती है. That means कि चालू होने में बहुत समय लेती है, ये लेजरिंग एक्शन परफॉर्म करने में ही टाइम लेती है. दूसरा ये है कि एफिशिएंसी ऑफ रूबी लेजर इज कंपैरेटिवली लो. रूबी लेजर में हमें पल्स लेजर मिलती है, कंटिन्यूस लेजर बीम नहीं मिलती है. ये भी एक इसका ड्रॉबैक है. Or optical cavity of ruby laser is short as compared to the other, and the laser output is not continuous but occurs in the form of pulses of microsecond duration, that which I have said to you. The defects due to crystalline imperfection are also present in the ruby laser. So basically ruby laser बहुत पर्टिकुलर चीज़ों में यूज होती है. फॉर एग्जांपल हमारे टैटू रिमूवल में पल्स लेजर का यूज होता है. ठीक है. सो बट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि इट रिक्वायर्स अ कूलिंग सिस्टम, प्रॉपर कूलिंग सिस्टम. इट रिक्वायर्स वेरी हाई पावर सप्लाई, विच इज डे टू डे बेसिस पे हम इसको ज्यादा यूज नहीं कर पाते. बट इट वॉज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड लेजर. And again, the application it is here. So it can be used as a decoration piece or artist display, that it was first constructed. It can be used in school and colleges, universities, in science program, that it was the first laser that is constructed, and it is used in this principle. And ruby lasers are used in holography, industrial cutting and welding, जो कि इसकी बहुत particular specific use है. And due to low output power, they are class 1 laser, and so many used as toys for children. And it was used by Leon Goldman, a pioneer in laser medicine, and it is used in medicine for like that I told you, that for tattoo removal and scar treatments and to induce healing. So basically this was a ruby laser. And इसके एप्लीकेशन में हम और देखें तो इस प्रकार से ये टैटू रिमूवल में यूज होती है और लेजिक सर्जरी में. बट that's not the work of ruby laser. It's an example of ki how a laser helps in medicine. Thank you.